Hello students, in this video we'll look at the question 1 of exercise 1.1 from rational numbers. So what is the first step we'll do? As we have done in the example number 5, first we will separate the terms. We'll mark the terms. Yeah. So ये है one term. So this is the another term and this is the another term. I told you whenever the terms are getting separated with the plus and the minus sign, they are the separate terms. I mean ये है multiplication का, ये है, ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एक टर्म होंगे, उसके बाद प्लस आ रहा है तो ये दिस इज द अनदर टर्म, अगेन देयर इज माइनस, सो अगेन ये टर्म सेपरेट होगा इन दो टर्म से, एंड दिस इज अगेन इन द मल्टीप्लिकेशन, सो दे आर वन टर्म. ऑलराइट, सो दैट इट इज. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉमन नंबर्स. फर्स्ट वी विल गेट देम टुगेदर, तो आई विल ब्रिंग दिस टर्म ओवर हियर. ऑलराइट, सो माइनस 2/3 times 3/5 and minus 3/5 times 1/6, and ये जो नंबर बच रहा है पॉजिटिव 5/2 हम इधर लिख लेंगे. सो this is our one term, this is our another term and this is the third term. Okay, so इन दो terms में हमें दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि इधर 3/5 कॉमन है. Okay, so here we applied the commutative property. Just we rearrange the term, that's why it is the commutative property. All right, और next हम apply करेंगे distributive property. As I told you, a b plus c is equals to a b and a c. तो इधर हमारे पास कॉमन क्या है, 5 है, तो ये इधर हमारे पास कॉमन a था तो a को हमने बाहर निकाल दिया और जो बचा था उसको ब्रैकेट में लिख दिया. तो इधर हमारे पास 3/5 कॉमन आ रहा है तो हम 3/5 को कॉमन लेंगे, दैट इज दिस टर्म एंड दिस टर्म, एंड व्हाट विल डू इज वट एवर इज लेफ्ट वी विल राइट इट इन द ब्रैकेट. तो इनमें क्या बच रहा है, -2/3 एंड दिस माइनस कम्स ओवर हियर एंड 1/6, and whatever is left that will write, that is 5/2. All right, next is we will simplify it further. 3/5 and इनको ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, हमको इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमको एलसीएम लेना होगा. इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अ ट्रिक टू गेट द एलसीएम वेरी क्विकली. जब दो नंबर्स एक ही टेबल में आएंगे तो बड़ा नंबर ही उसका एलसीएम होगा. दैट इज़ 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6. ये दो नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं तो इसका बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा. इफ़ नॉट, if this trick is difficult for you, then you can go ahead and find the LCM. So this is the LCM for you, and now we'll simplify. That is 3 times 2 is 6. इधर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया है तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6 times 1 is 6, तो न्यूमरेटर में भी 1 मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑलराइट, सो -2 times 2 is -4 and 1 times 1 is 1 plus 5/2. Next, 3/5 -4 minus 1 is -5 again, and that is 6 plus 5/2. इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है. जब हमारे पास ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं होगा, आई मीन ये दो टर्म्स सेपरेटेड है ब्रैकेट्स के बेस पर, है ना, तो इनके दरमियान न एडिशन है न सब्सट्रैक्शन है. दैट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेशन हियर. अगर कुछ नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है. सो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दो टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं. 5 कैंसिल हो रहा है 5 से, और 3 times 1 and 3 times 2. सो what are we left with? We are left with 1/1 times -1/2 and plus 5/2. Okay, so this is one term and this is another term, right? So we'll multiply this. -1 times 1 is 1 minus 1, and 2 times 1 is 2, and 5/2.
सो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो जब हमको डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो -1 विल राइट अ कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज 2, एंड 5 minus 1 is 4. All right. So what is 4 by 2? 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. So what is your answer? That's 2. So the answer for the question number 1 is 2. Now coming to the second question. So first what we'll do is we'll find the term. So this is the one term, this is another term, and this is another term, because they are separated by the plus and minus signs. And here they have the multiplication in between, so they are one term. Alright, so these are the three terms. अभी हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कुछ कॉमन नंबर्स को. Alright, do we have any common numbers here? In this term we have a common number, and in this term we have a common number, that is 2 by 5. So I will get this together, okay, using commutative property. So 2 by 5 times minus 3 by 7, this term I'll get over here, that is 1 over 14 times 2 by 5, और ये जो टर्म यहाँ बच रहा है मैं यहाँ लास्ट में लिखूँगी, दैट इज़ 1 by 6 times 3 by 2. Alright, so that's the commutative property. And now we will solve these two terms. Yeah, this is one term and this is the another term. और यहाँ ये कॉमन आ रहा है 2 by 5, और यहाँ ये कॉमन 2 by 5. इन दो टर्म्स में कॉमन है 2 by 5. So using the distributive property, that is taking a number common, that is a b plus c, that is equals to a times b plus a times c. Using the distributive property, we are going to solve this brackets, that is 2 by 5 हम कॉमन लेंगे. जब 2 by 5 कॉमन ले लिया है तो which numbers are left? These two numbers are left, right? So minus 3 by 7 and plus 1 by 14. So that's what it is left in the bracket. और यहाँ जो कुछ बच रहा है हम लिख देंगे, that is 1 by 6 times 3 by 2. Again 2 by 5, when we have to add these two numbers, तो हमको एलसीएम लेना होगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. और मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर है, सेम नंबर सेम टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जो बड़ा नंबर है वो ही एलसीएम होगा. सो हियर द एलसीएम विल बी 14 एंड 7 times 2 is 14, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. 14 times 1 is 14, तो इधर भी 1 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो minus 3 times 2 is minus 6, and this plus comes over here, and 1 times 1 is 1 माइनस, और ये जो नंबर है अभी तक यूज़ नहीं हो रहा है तो हम उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 3 6 2s are 12. या, एंड दिस इज़ यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. राइट, नेक्स्ट 2 by 5 will be 2 by 5, and minus 6 plus 1 is minus 5 by 14 and minus 3 by 12. सो ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है. मैंने कहा था जब दो नंबर्स के बीच कोई भी साइन नहीं होता तो ये मल्टीप्लिकेशन है. ये नेगेटिव साइन है, फिर भी ये दो साइंस मल्टीप्लिकेशन में है. ऑलराइट, कैन यू सी हियर दीज टू साइंस, दीज टू नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन. सो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज़ 5 times 1 is 5, 5 times 1 is 5, 2 times 1 is 2, 2 7s are 14. So what are we left with? 1 times 1 is minus 1, minus 1 times 1 is minus 1, and then here you have 7 times 1 is 7, and then minus 3 by 12. So ये नंबर भी डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, हम इसको इससे ही कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज़ 3 times 1 is 3, and 3 times 3 4s are 12, right? So what are we left with? We are left with minus 1 by 7 and minus 1 by 4. So what is the LCM here? You can go ahead and take the LCM. So 7 times 4 is 28. जब एक प्राइम नंबर आएगा तो उसका LCM ऐसे फाइंड करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस. That is the easiest way to find the LCM when you have a prime number. Okay, that is 7 times 4. यहाँ भी 7 और 14 था, पर इसका प्राइम नंबर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में जा रहे थे.
तो इसका बड़ा नंबर हमने एलसीएम ले लिया। तो ये दो सेम टेबल में नहीं जा रहे हैं एंड दिस इज़ द प्राइम नंबर, सो व्हाट डू वी डू इज़ वी डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम टू गेट द एलसीएम. If you get confused with this, then you can go ahead and find the LCM with the usual method. So 7 times 4 is 28. So यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे. So 4 times 7 is 28. तो यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे. So that's minus 4 and minus 7. So what is minus 4 and minus 7? That's minus 11 over 28. So that's your answer.